Good morning students, welcome to my YouTube channel पटना मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 5 और 6 देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो a इक्वल टू 1, b यहाँ पर नहीं है मीन्स 0 है, एंड c इक्वल टू -50। अब जैसा कि मैंने बताया था कि t स्क्वायर -15 इक्वल टू 0 लगा देंगे। 0 लगाने के बाद देन इम्प्लाइज ये t टू होल स्क्वायर -√15 टू होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देन इम्प्लाइज a प्लस b एंड a माइनस b, सो t प्लस √15 वन ऑफ द फैक्टर्स एंड t माइनस √15 इक्वल टू 0, सो देन इम्प्लाइज t प्लस √15 इक्वल टू 0 और t माइनस √15 इक्वल टू 0। सो t इक्वल टू -√15 और t इक्वल टू प्लस √15 या √50। सो दीज आर टू zeros of the given polynomial, quadratic polynomial. Okay, now verification. Verification of its zeros and their coefficient. Okay, so first of all, product of zeros, equal to, product of zeros means you can also write alpha plus beta if alpha and beta are the zeros. So sorry, first we should write sum of zeros, not product of zeros. Okay, so sum of zeros equal to -√15 plus √15. So what will be the result? So result will be 0. So 0 upon 1. So now you can see here b is 0. Okay, so in place of this is minus b, and 0 is neither negative nor positive, so minus b by a. Now product of zeros equal to -√15 into √15 equal to, you can see -√15 into √15 equal to 15 by 1. So this is equal to c equal to -15 c by a. So here you can write minus coefficient of x by coefficient of x square. Here constant term by coefficient of x square. Understood? So now this is about question number 5. Now we will discuss about question number 6. So now a equal to 3, b equal to -1, c equal to -4. So 3x square minus x minus 4 equal to 0. When you split the middle term, you will get 3x square minus 4x plus 3x minus 4 equal to 0. So now you can take x as a common,
so 3x minus 4 plus 1 as a common, so 3x minus 4 equal to 0. So then implies 3x minus 4 as a common, so what left? X plus 1 equal to 0. So then implies 3x minus 4 equal to 0 or x plus 1 equal to 0 also. So then implies 3x equal to 4 or x equal to minus 1. So then implies x equal to 4 upon 3 or x equal to minus 1. So these are two zeros of given quadratic polynomial. Okay, now verification. Verification of its zeros and their coefficients. So now sum of zeros equal to, so sum of zeros equal to 4/3 plus minus 1/1. So this is equal to 3 as LCM. So 4 and plus minus 3, so 1 upon 3. You can see 1 upon 3. So now 1 upon 3 can be written as minus 1 upon 3. Now you can see b equal to what? So minus b by a. So this means coefficient of x by coefficient of x square. Okay, similarly product of zeros equal to 4/3 into minus 1 equal to minus 4/3. अब c equal to minus 4, you can see. So this is equal to c by a. So constant term by coefficient of x square. Okay, so constant term by coefficient of x square. तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यानी क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ zeros are given or sum of zeros and product of zeros are given. ओके, सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ. अगर वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. ओके, सब्सक्राइब अवश्य करें. थैंक यू वेरी मच.